Hello and welcome to Business Today Television. I'm here at Davos at the World Economic Forum at the India Lounge, where Business Today and India Today has been doing a lot of programming from. And with me now, a special guest, Anil Agarwal, the Chairman of Vedanta Resources. Mr. Agarwal, welcome to the show, and one more conversation from the World Economic Forum at Davos. Last time we were doing this while walking around because it was summer, there were flowers, but now it's pretty snowed in, so we are doing it here in this very nice setting. I want to begin by asking you to tell our viewers what has changed for you in the last 9-10 months in business terms, because what we spoke then, from then where have you progressed, what are the key highlights? The whole world has changed in 1 year. First of all, thank you very much for India Today, my favorite channel. Also, the Davos, such a beautiful. If anybody want to come and see, this is heaven. The way but nothing is like our Kashmir. Kashmir, I would say, is the best. So very nice to be here. In 1 year, lot of things has happened. If you see the war between Russia and Ukraine has emerged, and that has changed the whole world completely. The way the politics has moved on, China has created a huge shake-up whereby literally the Commerce Secretary of US has said, we want to move out of the China. They were the second largest economy. They are moving. So in 1 year, I think literally the world has moved. But I think India, we are optimistic. You know, one of the things which I always think, we are not religion-minded, but we are spiritual. We have a blessing of our parents. We believe in our elders. So these things also help us to remain optimistic. Absolutely. Mr. Agarwal, one of the things that we have seen here, and as we speak at the forum, are two surveys that have come out. One from the World Economic Forum, another one from PwC, and both have a common thing, that global CEOs are very worried about the prospects of economic growth. They're saying there will be a recession in 2023. There is Indian CEOs who have also been polled, but they are less worried. Therefore, they are more positive towards the Indian economy. If I asked you as a founder and as an entrepreneur of such a large industrial enterprise, what is keeping India different and what sets it apart from the rest of the world, where there is so much pessimism and in India there is so much optimism? There are not so much optimism, but for sure there is everybody. I attended this afternoon lunch with the founder of World Economic Forum and the Secretary General. About 15 country prime minister was there, WHO head, IMF chief, anybody and everybody you say, all the bank chairman was there. Everybody said that 23 is going to be recession. It will be a challenge to the world, and we have to tighten our belt. So I'm fully agree with you what has been, but India, the spirit, the motivation, and the spirit, the hope which has come into the common people, 1.4 billion people, everybody. At the moment, we have a 20%, 60% people are lower middle class, and their aspiration is to have everything, whether house, car, scooty, gas, or anything. That is a very large population, and even they says with 2040. The world average age is going to be 55 and plus. India, they say it will be 29.
So big hope on India. So what has been pushed us for a couple of 100 years, it is coming back, and I'm also optimistic of what is happening in India. We are at least 20 years behind the world. If you look at our electronic, we are lifestyle. Anything you talk about, we are about 20 years behind. And people's aspiration is that to develop here, and with this, our Mr. Modi's government has inspired entire 28 states of India. Each one chief minister is running around how to get investment, how to set up the factory, to sell what they have, whether they have a tourism, whether they have a sports, whether they have a factory, whether they have agriculture. This I've never seen. Right. So this aspiration make me believe that world has left us behind. So something. But this is a good point. You spoke about the competition between states, and that is part of our fiscal federalism and the fact that we are a different kind of democracy compared to some other countries. What dictated the choice behind Gujarat for one of your most massive investments? No, first of all, this semiconductor has changed the world. Without semiconductor, world won't move forward. Whether you take EV, whether you take TV, or whether you take smartphone, you take anything, you need a semiconductor. And semiconductor monopoly was Taiwan. There was a war on the Taiwan and the America. Only because of Prime Minister Modi perseveres and his vision, he wanted, in normal case, we would have produced semiconductor another maybe 10 years later. But because of his visionary, because he thought that the semiconductor and display glass will be produced in India, which we have imported almost $30 billion, there will be thousands of industry will come up, and we will create a huge Silicon Valley. What is our need? Our need are that eradicate poverty. Our need are to get a job. Our need are our women and the girls to get a confidence to go and work. These are the fundamental. Our need are to create a infrastructure. A government has no business to be in a business. Healthcare is very important. Clean water is very important. So these things, I believe, because of this electronic, because of technology, this will be coming. And for me to go to Gujarat, we had a very independent team, which was consistent of about 3 consultants, Foxconn team, and we have gone around all the state, and we find that looking at every choice, Gujarat came. Is not that the other state was not there, that Gujarat came first, and we said we'll go to Gujarat. Also, Gujarat will only produce raw material. Same investment will be at every state, whether it's a Karnataka, Maharashtra, where the product like laptop, phone, EV will be produced. And I'm looking forward, each state investment will come, ecosystem will develop, a lot of downstream industry will come. I will put my heart and soul into this to create a semiconductor and glass, because that will change. The 3 things will change our country, or 4 things. Number 1 is the semiconductor glass electronic. Number 2, our natural resource which we are importing day in, day out. We have all the resources. Number 3, government efficient in public sector. Corporatize it, privatize it, 3 times, 4 times production will increase. Number 4, our tourism. Our tourism is phenomenal. Right. Everybody in the world want to come to. How do we create that private sector? Right. Where they create the ecosystem. On the semiconductor plant, just one quick follow-up. In terms of where it stands today, what can you share with us in terms of the plans and how closer you are to getting it started?
we are looking to have a groundbreaking ceremony in 30-40 days time, which is very important. We have all the tie-up with the Inolex, Foxconn, world best technology, because it's going to be Silicon Valley. I always dream a Silicon Valley, a university like Harvard. These are my dream, and this Silicon Valley let's create. So we 30-40 days and 2.5 years. We need a lot of good wishes, all of us. Keep remaining positive. Keep remaining positive. We will have chips to India and to outside world also. Okay, that's a very important point for a country which is completely dependent on imports of semiconductor chips. For Mr. Agarwal to say that within less than 3 years there will be exports of semiconductor chips as well. As we move beyond this, I want to go to another point. You had recently shared a LinkedIn post where you said, and I hope I get this right, that you got a fortune cookie with your chai. न्यू ईयर न्यू मी वाला किस्सा है पुराना, ओल्ड मी को ही बेहतर करते रहना है असली खजाना. ये क्या चीज थी, ये फॉर्च्यून कुकी कैसे निकली और उसमें से बात क्या निकली पूरी? नहीं, कुछ मजा मेरे को लगता है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं और छोटी छोटी बातें करना. मैं अभी बिहार भी गया था तो लोगों ने बड़ा अपना माना. यूपी भी जाता हूं तो सब लोग अपना आप मानते हैं. तो और अब गुजरात भी आपको अपना मानेगा? नहीं, वो हमारी रूट्स वही है ना. हाँ जी, हमारे रूट्स यूपी बिहार में ही है. मैं तो वहीं जो कुछ भी है मैं वहीं का ही हूँ. कितना ही बदल जाऊं तो ये फॉर्च्यून कुकीज में बहुत अच्छा सा निकला कि भाई कुछ भी होगा हम अपनी पुरानी चीजों को नहीं भूलेंगे. नई चीज आती रहेंगी लेकिन हमारे जो रूट्स हैं उनको हम नहीं भूलेंगे. कुकी का वही मतलब था उसका, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से मतलब निकालता है. जी, इसीलिए मुझे लगा कि आपसे पूछ के आपसे ही डायरेक्टली मतलब समझा जाए. पिछले सालों में, और अनिल जी इस पे आपसे मेरी बात पहले भी हुई है कि भारत में कारोबार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत फोकस दिया गया है. दूसरी तरफ कई सेक्टर्स में ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं, 1200-1300 कंप्लायंसेस एक सेक्टर में, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने मुझे बताया. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना सुधार हुआ है, और आप जैसे उद्योगपति के लिए जो इतना पैसा निवेश करने वाले हैं, भारत में पहले भी किया है, क्या स्थिति में परिवर्तन आया है? हमने अमेरिकन लोगों से बात की और वो सारे इंडिया आना चाहते हैं. वो बोलते हैं हम पैसे भी ले आएंगे, हम टेक्नोलॉजी भी ले आएंगे, हम सब कर लेंगे, आदमी भी हमको मिल जाएंगे. हमको एक तो जमीन चाहिए, जमीन में बहुत बहुत तकलीफ होती है. दूसरी ब्यूरोक्रेसी. तो दोनों में सुधार हो रहा है, लेकिन ये मैसेज जा रहा है. जब हम बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन जब फॉरेनर बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एंड जमीन के बारे में मैंने सुझाव भी दिया है कि जमीन देने वाला भी देना चाहता है, क्योंकि पैसा कोई कम नहीं दे रहा है, डबल पैसा दे रहे हैं जी. और लेकिन कहीं ना कहीं कोई एनजीओ लग जाता है, कोई पीछे लग जाता है, गुंडे बदमाश लग जाते हैं, वो जमीन नहीं मिलती है, टाइम लग जाता है. तो कुछ ऐसी पॉलिसी निकले कि जिसके नाम में जमीन है उसको हम डायरेक्ट चेक भेज दें डबल प्राइस का, और अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो जमीन ऑटोमेटिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए, जा रही है वैसे ही चला जाए, और उसके ऑटोमेटिक उसके हिसाब से हमें जमीन मिल जाए. ये पॉसिबल है. अगर ये हो जाता है तो बीच वाले सब खत्म हो गए. कोई रजिस्ट्री कराने की ऑटोमेटिक रजिस्ट्री हो गई कि अगर उसने पैसा एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जमीन तो सारा 7/12 में लिखा ही हुआ है, तहसीलदार के पास सारे नाम है, जो आके मान लीजिए वहां 10,000 के दाम है, आपने 20,000 के दाम दे दिया. बीच का कोई ना रहे. पैसा बहुत बढ़िया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लैंड को लेके भी हो, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो लैंड आपकी हो जाए. और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जितनी तेजी से पैसा जाए उतना तेजी से जमीन ऑटोमेटिक हो जाए ना. बिल्कुल, ये बड़ा आपने एक अच्छी बात कही है. अनिल जी, एक और बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि यहाँ पे भी हम डावोस में देख रहे हैं, और हमने भारत और विदेश के बहुत सारे सीईओ से इंडिया टुडे समूह पे यहाँ बातचीत की है. और एक विषय जो आ रहा है कि बाहर बिजनेस करने को लेके और इंडिया में बिजनेस करने को लेके, एनवायरनमेंट को लेके बहुत चीजें सोच रहे हैं. आपकी कंपनी को एनवायरनमेंट को लेके तमिलनाडु में काफी परेशानी झेलनी पड़ी. तो एनवायरनमेंट के विषय को लेके आपको क्या लगता है कि एक अलग तरीके से जुडिशरी को और पॉलिसी मेकर्स को इंडिया में स्थिति का जायजा लेना चाहिए?
ये हमारे नेशनल एसेट है, हम ग्रोइंग कंपनी है। हम जैसे हमारे बच्चे जो भीख मांगते हैं, मेरे को डर होता है कि वो आगे बढ़ के क्या करेंगे। आप पहले ही उनका पैर तोड़ रहे हैं, क्रचेस पहले ही पहना रहे हैं। हम लोग ग्रोइंग कंट्री है ना, ये सारे पॉलिटिकल हो जाते हैं। आज इंपोर्ट होना चालू हो गया है, हिंदुस्तान में कॉपर नहीं बन रहा है, तो कोई इन्वायरमेंट का कोई मसला ही नहीं है। आज जब से फैक्ट्री बंद पड़ी है, सेम लेवल है एंड सबने अप्रूवल दिए हैं। आज ये हाल है कि इतना लोकल सारे के सारे लोग इस कंपनी को चालू करना चाहते हैं। अब वो कोर्टों में डेट नहीं पड़ती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी इज टाइम इज द एसेंस। तो ये मेरे को लगता नहीं है कि इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन ऑफ टाइम कि 10 दिन और लगेगा कि 1 महीना और लगेगा। बहुत जुडिशरी भी बहुत फेवरेबल है, एनजीटी जो है वो भी बहुत फेवरेबल है, लोकल एनजीओ जितने थे वो भी बहुत फेवरेबल हैं। और कोई भी मॉनिटरिंग एजेंसी लगाकर कुछ भी करें, लेकिन शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि उससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हम गरीब रह जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो कॉपर स्मेल्टर है काफी समय से रुका हुआ और काफी बड़ा प्लांट था, उसमें आपको उम्मीद है कि वो फिर से वापस कारोबार कर पाएगा? सारे लोग मेरे खरीदने के लिए भी तैयार हैं, हमको देने। शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि नेशनल एसेट है। एक जो ऑल्टरनेटिव न्यू एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, आपका माइनिंग का बहुत सारा जमीन से नीचे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको बहुत ज्यादा उसका अनुभव है। तो आज हमारी जो डिपेंडेंस है, क्रूड ऑयल हैं, कई सारे मिनरल्स हैं, और मैं रेयर मिनरल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो भारत के नीचे जो जमीन के नीचे इतना जखीरा पड़ा हुआ है, वो हम पूरी तरह निकाल पा रहे हैं? कोयला भी एक मसला है, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो समस्या क्या है? आज मैं बात कर रहा था, सारे सुबह हमारे जितने माइनिंग के वर्ल्ड के जितनी कंपनियां थी वो हम लोग सब साथ में थे, और इंक्लूडिंग अमेरिकन। वो बोले हम कोल माइनर बंद नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्यों मिथ हो जाता है सारे, क्योंकि हम लोगों को तो कॉपर भी चाहिए, एल्युमिनियम भी चाहिए। आज कोई टेक्नोलॉजी की भी चीज बनाते हैं, फोन भी बनाते हैं, ईवी भी बनाते हैं, 5 टाइम मोर मेटल लगेगा। और इंडिया में आप पुरानी तरह से देख लीजिए तो ये पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, ये पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका था। भूकंप आने के बाद वो 3 अलग अलग हो गए। हमारे यहाँ वही मिट्टी है, उसी मिट्टी से आप गेहूं बनाते हैं, उसी मिट्टी से चावल बनाते हैं, और उसके नीचे में सोना पड़ा है, सारा सोना हमारे यहाँ भरा पड़ा हुआ है। जब तक कि पॉजिटिविटी के साथ में रेवेन्यू माइंड नहीं बना करके हम लोग ऑयल एंड गैस सब चीज हम अपने आप बना सकते हैं। जितनी सिंपल पॉलिसी बनाएं, एक ही 10-10 तरह की 10-10 की मिनिस्ट्रियां हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप जितना माल अंदर से निकालोगे उसका सर्टेन परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हमको रेवेन्यू माइंडेड नहीं होके हम लोगों को प्रोडक्शन माइंड होना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो यंग लोग हैं, लड़के और लड़कियां, वो इस क्षेत्र में लगेंगे। अनिल जी, फिर ये माइंड का जो परिवर्तन आप कह रहे हैं, ये किसका होना है? मतलब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल जाहिर है कि माइंड परिवर्तन किसी और का होना है। आप साफ शब्दों में बताएं, किसको अपना माइंड बदलना पड़ेगा ताकि हम ये कर पाए? एक तो दुनिया नहीं चाहती है कि हम बनाएं, दुनिया हमको मार्केट बन रखना चाहती है। इतना बड़ा मार्केट है, डालते जाओ, सोना डालते जाओ, तेल डालते जाओ। आज आप देखो ना, मिडिल ईस्ट वाले आज के द मोमेंट आप उनको बोले कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हम खुद निकाल रहे हैं, उनको सांप सूंघ जाता है। उनका तो सारा माल हमारे यहाँ से बनता है। हमारे सोने बनाने वाले हैं, सब सोना यहीं हमारे यहाँ डालना चाहते हैं। हमारे तो भरा हुआ है, कोलार है हमारे यहाँ, हाथी गोल्ड माइन है, भारत गोल्ड माइन है। आपने हिंदुस्तान जिंक हमको दिया, बाल को दिया, बोले सो माल नहीं है। 10-10 गुना माल निकलता है, आयरन ओर में माल निकलता है। तो ये कभी कभी मेरे को लगता है फेज आता है, एक हवा चलती है। आज हवा इलेक्ट्रॉनिक की चल रही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एक दिन हवा इसकी भी चलेगी। जैसे आज सऊदी वाले हैं, आज अमेरिका वाले हैं, ये माइनों खाली इसी में लगे हैं कि हम माइनर मेटल को कैसे डेवलप करें, हम लिथियम कैसे निकालें, हम, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, निकल कैसे निकालें, सब कुछ हमारे यहाँ है। आप देखना, हमारे यूथ जिस दिन काम में लग जाएंगे, हमारी लड़कियां जब काम में लग जाएंगी, और ये भेदभाव कम होगा, अमीर गरीब का, जो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता है।
ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। अनिल जी, इस बातचीत को समाप्त करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जब रोज सुबह उठते हैं तो सबसे पहला स्मरण किसका करते हैं? मैं अपने माँ बाप का तो बहुत, उनको ही मैं भगवान मानता हूँ, उनका स्मरण तो जरूर करता हूँ कि मैं बाहर रहता हूँ। इसके अलावा एक ही बात भगवान से मनाता हूँ कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मैं सेवा करते हुए ही छोड़ूं, कि जो अपने लिए किया तो क्या किया, जो रह गया सो अपना है, जो दे दिया सो सपना है। दिल से बोल रहा हूं, एक ही है कि मेरे देश की गरीबी कैसे दूर हो, मेरे यंग लोग कैसे आगे आएं और हम पॉजिटिव माइंड रह के उसमें एक दिशा में चलें और इस देश को दुनिया की सबसे बढ़िया जगह बनाएं। बिल्कुल, और ये बात आपने कही, इसका मैं धन्यवाद देता हूं आपको, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और आप दर्शकों को जो इन्होंने ये बातें भी की थोड़ी भावनात्मक और एक ठोस बिजनेस की बात जो हमें बताई कि लगभग 35-40 दिनों में सेमीकंडक्टर प्लांट, जो भारत की बहुत एक बड़ी आवश्यकता है, उसकी नींव डलने वाली है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। अनिल जी, मेरा व्यक्तिगत आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि वो प्रोजेक्ट अच्छे से बने और जो भी उसमें होना हो वो जल्द से जल्द हो। ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस टुडे एंड all our viewers, I thank you and wish you all the very best. That was Anil Agarwal, the chairman of Vedanta Resources, talking about many things, including that one very crucial investment for semiconductors in the state of Gujarat. We'll be back with more. Do stay tuned in. I'll see you again. Bye-bye.